असिस्टेंट फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा काउंटर करंट मैकेनिज्म हाउ द यूरिन गेट कंसंट्रेटेड, आज के वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। सो द फंक्शन ऑफ द किडनी इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, ऑलवेज द फंक्शन ऑफ द किडनी इज regulated by hormone feedback mechanism of hypothalamus juxtaglomerular cell and heart। जैसे हम सबको पता है when we drink the more amount of water the kidney excrete the more urine, when we drink the less amount of water kidney excrete the less amount of urine। ओके, अब देखो समर में प्रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, मींस जितना पानी पीते हो मैक्सिमम वाटर इज एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ प्रेस्पिरेशन, तो समर में यूरिन आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि किडनी वाटर बैलेंस करती है। वैसे आप विंटर में देखो प्रेस्पिरेशन कम हो रहा है, आप पानी कम पीते हो बट यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। ओके, सो किडनी इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन, बट हाउ द किडनी इज मेंटेन और रेगुलेट द ऑस्मोरेगुलेशन? सो whenever the blood volume is decreased or the body fluid is decreased or body fluid decrease। अब जब बॉडी फ्लूइड डिक्रीज होता है तो क्या होता है? The blood vessel has the osmoreceptor। Blood vessel has osmoreceptor। This osmoreceptor get activated। The osmoreceptor get activated। अब जैसे ही osmoreceptor एक्टिवेट होंगे it will activate the hypothalamus। वो कहाँ मैसेज में भेजेंगे? हाइपोथैलेमस। अब जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा इट विल एक्टिवेट द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and this posterior pituitary gland is also known as the neurohypophysis। So neurohypophysis। So whenever the blood volume is decreased or body fluid is decreased, the blood vessel has osmoreceptor and osmoreceptor get activated, it will give message to brain, particularly hypothalamus। Hypothalamus activate the posterior pituitary gland and the posterior pituitary gland is also known as the neurohypophysis, which release the hormone that is vasopressin, and this vasopressin is the antidiuretic hormone। It is known as the antidiuretic hormone। Now this antidiuretic hormone vasopressin क्या करता है अभी? Now this vasopressin is increase the reabsorption of water from the renal tubule। It will increase reabsorption of water from renal tubule। अब जैसे ही renal tubule में से पानी का reabsorption बढ़ जाएगा तो क्या होगा? यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज। उसकी वजह से यूरिन आउटपुट is decreased and blood volume is increased। पता चल गया? So whenever your blood volume is decreased, the osmoreceptor get activated। This osmoreceptor activate the hypothalamus। Hypothalamus gives message to pituitary gland and the posterior pituitary gland release the vasopressin। This vasopressin increase the reabsorption of water from the renal tubules and thereby it will decrease the urine output and increase the blood volume। Now जैसे ही blood volume बढ़ेगा it again gives the message to osmoreceptor and the osmoreceptor get deactivation। So deactivation of osmoreceptor। जैसे ही osmoreceptor deactivate होगा it will give message to hypothalamus and hypothalamus
decrease the release of vasopressin, from posterior pituitary gland, जैसे वासोप्रेसिन का रिलीज कम हो जाएगा, इट विल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, और जैसे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, again the blood volume get decreased. So by this way, with the help of osmoreceptor, the kidney regulate the blood volume. Okay, so this is all about the regulation of kidney function with respect to osmoregulation. In next video we will discuss the regulation of kidney function by RAS system, that is RAAS, renin angiotensin aldosterone system. Thank you.